tuning in to Meerut Now. You're watching news this hour with me, Tanvi Shukla. Let's begin with the headlines. All attempts to stall trial fail 4 years after the crime. Tarun Tejpal charged with rape, sexual harassment and wrongful restraint. Big relief for owners of Ryan School. Punjab and Haryana High Court stays arrest until 7th of October but instructs the Pintos to join the investigation. In the name of religion, love ke dushman has struck again. Bajrang Dal disrupts an interfaith marriage, even heckled with the cops. Last week, BJP leader slapped a Hindu girl for befriending a Muslim boy. Now fringe targets another interfaith couple. Is this acceptable to Chief Minister Adityanath? A day after Yashwant Sinha slammed the government over slowdown in economy, his son and Union Minister Jayant Sinha comes out to defend the government's record. Times of high fuel prices, government speaks of home delivery for petrol. Is the idea outrageous or groundbreaking? That's the debate later tonight. Journalist Chakravarti Chandrachud questioned by the SIT in connection with the Gauri Lankesh murder case. Who's helping Dera Chief's close aide Hanipreet Insan? Haryana SIT chief floats a spy theory, claims someone from the police department is leaking information to Hanipreet. Well, here's our top story this evening. Is in less than 1 week, another instance of intolerance, religious intolerance coming to light from Uttar Pradesh. Members of Bajrang Dal preventing a Hindu girl and a Muslim boy from getting married, calling it a case of love jihad. Bajrang Dal members told an alliance to be registered at a Meerut court. In fact, they even attacked the couple and heckled the policemen who were providing security at that place. After the ruckus inside the court premises in Meerut police later on handed over the couple to the Faridabad police since the girl's family had given a written complaint to the police of her being missing. Later on, the police has recorded their statement and the girl has said it to the police officials that she has gone on her will. But the big question is that instead of the ruckus and hooliganism inside the court premises, there is no FIR or action which has been taken by the UP police against the Bajrang Dal Karyakartas, which once again shows that the UP government is shielding the Bajrang Dal. With video journalist Mukesh Kumar, Priyank Tripathi in Faridabad for Meerut Now. अभी पुलिस में यही है, लेकिन 164 के बयान अभी हम करा रहे हैं कोर्ट में और जैसे उसके बयान होंगे वो लीगल कार्रवाई। हाथापाई भी हुई थी कल उन लोगों के साथ, इस मामले में कुछ बताया मेयर पुलिस ने आपको? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ तो लेकर आए, सिर्फ वो ठीक थे। अब उनके 164 के बयान कराए जा रहे हैं और नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। कुछ कंप्लेन दिया उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो उन्होंने कल उनके साथ हाथापाई की थी कंकड़ क्रिया थाने में? इस संबंध में मेरी नॉलेज में नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं और वहाँ से हम ठीक-ठाक वही बता सकते हैं। हमारे यहाँ कोई Earlier today, Meerut Now confronted the Bajrang Dal leader Balraj Dungar, who was present at the spot during the incident, and this was his justification. केवल अफेयर का विषय नहीं था, शादी का विषय नहीं था, ये तो सीधा सीधा धर्मांतरण का विषय था। ये फरीदाबाद की हिंदू लड़की जिसका मस्जिद में ले जाकर पहले धर्मांतरण किया गया, उसके बाद कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने बुर्का पहन कर लड़की आती है, तो इसको क्या कहेंगे? ये तो सीधा सीधा लव जिहाद है ना। और उसी के साथ में मैंने उसके माता पिता ने वहाँ अपहरण की FIR कर रखी है और उसके बाद में हमने कोई उसको पुलिस के माध्यम से हमने कार्रवाई कराने का प्रयास किया। पुलिस वहाँ पहुंची, पुलिस ने वो शादी रुकवाई है, वो बजरंग दल ने शादी नहीं रुकवाई। बजरंग दल ने विरोध किया। विरोध किसका किया है? प्यार का विरोधी नहीं है बजरंग दल, लेकिन प्यार कैसा? भगवान माँ पार्वती और भगवान शिव जैसा। एक बार हाथ पकड़ा तो जन्म जन्म तक होना चाहिए ना। मैं उस हक से उसको इंटरफेयर कर रहा हूँ। वह लड़की हिंदू थी और उसका धर्मांतरण कराया जाता, इस वजह से इंटरफेयर था बजरंग दल का। कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने आ रही थी, लेकिन बुर्का पहनकर लड़की आ रही थी, इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले एसपी सिटी को फोन करने वाला कोई और नहीं, बलराज डूंगर था। एसपी सिटी को हमने अवगत कराया। अगर हम गुंडागर्दी करते तो हम पुलिस को क्यों अवगत कराते? आप पता करिए वहाँ के एसपी सिटी को, आप पता करिए वहाँ के थाना अध्यक्ष को, हमने उनको अवगत कराया नहीं कराया।
Rakesh Verma of the Bajrang Dal on the phone line with me. Rakesh Verma, what is it to you? What authority are you to go and stop anybody from getting married legally in a courtroom? देखिए, बजरंग दल की बात हो या विश्व हिंदू परिषद की बात हो, कोई भी संगठन हो, लेकिन अगर कोई भी प्रलोभन दे करके और लालच दे करके प्यार के जाल में फंसा करके, आपको कैसे पता प्यार का जाल था वो? क्या लड़की ने आपको आके बोला? लड़की के माँ बाप ने आपको आके बोला? आपको कैसे पता? धर्म बदल रही है तो आपको लगता है ये लालच में है? किसी ना किसी ने जरूर बोला होगा। क्यों? क्योंकि लव जिहाद नाम जो शब्दावली, ये लव जिहाद का आप हमें मत सिखाइए, लेक्चर मत हमें मत दीजिए। मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है, आप कौन होते हैं जाके कंप्लेन करने वाले, वहां पे रोकने वाले? विजुअल्स में देखिए, दंगा क्यों कर रहे हैं वहां पे आप लोग? हमारे समाज की कोई भी लड़की को अगर कोई बहला फुसला करके शादी करना चाहेगा तो हम लोग, आपको कैसे पता उसको बहलाया गया, फुसलाया गया? एडल्ट है वो, 18 साल की हो चुकी है, इस देश में वोट कर सकती है, अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। हमारे समाज का आपको किसने ठेका दे दिया समाज का? 18 साल की हो चुकी है, 18 साल की हो चुकी, इसका कोई साक्ष्य है क्या? हमको तो बताया गया वो लड़की अभी नाबालिग है। तो फिर कोर्ट में शादी नहीं हो सकती थी ना? आप कौन थे वहां पे? आप क्या जज हैं? आपको किसने ठेका दिया? आप पुलिस हैं, आप जज हैं, आप इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेता हैं जिनको चुना गया है वोट करके। आप किस हक से गए वहां पे, ये सवाल है। हम भारत के एक न्याय प्रिय नागरिक के होने के नाते गए। हमारे वहां जो कार्यकर्ता गए वो पुलिस को साथ में लेकर के गए। अगर उनको अपने आप से हस्तक्षेप करना होता वो तो पुलिस को लेकर के ना जाते, पुलिस को लेकर के गए। और चूंकि इलीगल काम हो रहा था इसलिए पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने जाकर के उसको रुकवा दिया। नहीं, पुलिस को आप वहां पे जबरदस्ती लेके गए। आपने विजुअल्स देखे? वो जो हाथापाई धक्का मुक्की चल रही है वो क्यों हो रही है? आप गए क्यों उस तरफ? और अगर आप इतने ही न्याय में बिलीव करते हैं तो आप कोई कोर्ट में लॉयर या जज क्यों नहीं बन जाते? आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? आप एनजीओ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? आप एक नेता क्यों नहीं बन जाते हैं? लोगों को चुनने दीजिए आपको, फिर आप उनके नाम पे ये सब करिए। आप अपने हिसाब से क्यों कर रहे हैं? बजरंग दल का राज है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, बजरंग दल का नाराज नहीं, इस देश में, इस प्रदेश में कानून का राज है और विधि सम्मत सरकार है। एग्जैक्टली। तो आप तो कानून के रखवाले हैं नहीं। हम कानून के रखवाले नहीं, लेकिन हम लोग कानून के सहयोगी जरूर हैं। इसीलिए हमारे वहां के लोगों ने तो गैर कानूनी क्या काम हो गया? आप मुझे बताइए, आपके पास क्या उस लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट है कि वो नाबालिग थी? क्या उस लड़की ने कंप्लेन लिखी? लिखित में आपको कुछ चिट्ठी दी कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है? उस बालिका से संबंधित लोगों ने ही हम लोगों से कहा होगा। कौन लोगों ने सर? ये जो ये झूठे पाठ मत पड़े, कौन लोगों ने कह दिया? कोई ना कोई कहा होगा, हम किसी को क्यों बताएं? और सबसे बड़ी बात यह है आप इसलिए बताएंगे क्योंकि आप लॉ को अपने हाथ में लेके वहां पहुंच जा रहे, दो लोगों को शादी नहीं करने दे रहे हैं, आपने उनकी जिंदगी को अपना मतलब बना लिया, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा ना। महोदया, शब्दों को सुधारें। हम लोग अपने कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। हमारे लोग वहां पुलिस के साथ में गए थे। अगर डायरेक्ट वो चले जाते तो कानून को अपने हाथ में लेना होता। पुलिस साथ में गई थी, इसलिए आप कानून को हाथ में लेना इसको नहीं कहते। तो पुलिस से क्या झगड़ा हो रहा है उधर? बताइए मुझे, आपने देखे होंगे विजुअल्स, बताइए मुझे। वहां जो 2-3 लोग हैं आप ही के दल के लग रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, शायद आपके साथ के साथी हैं कि नहीं है। वो पुलिस से क्यों झगड़ रहे हैं? अब कोई जब शादी करने एक हिंदू बालिका के साथ जाएगा तो उस लड़के के साथ ही 10-20 लोग तो रहे होंगे। तो हो सकता है उनसे उलझ रही हो पुलिस, उनको बीच बचाव करा रही हो। नहीं, वो तो किसी आपने विजुअल देखा और इस चीज को क्लियर कर लिया। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो आप ही से बोल रही हूँ ना, क्लियर कर दीजिए क्या हो रहा है उन विजुअल्स में। आप बजरंग दल के, आप मुझे बता दीजिए कि वो आपके दल के लोग नहीं है, वो उस लड़के के घर के तरफ से आए थे। सीधा साधा सा मतलब ये है कि इस देश में केरल की हाई कोर्ट ने लव जिहाद की शब्दावली की है। इस देश के कोर्ट ने पुलिस को बोला है कि देखो इस केस में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी हिंदू मुस्लिम की दोस्ती या शादी में आप लोग खड़े हो जाएं बोलने के लिए कि ये लव जिहाद है।
ठीक है, एक केस में उन्होंने पुलिस को बोला है जाके देखिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये बात हुई है। उस नाम पे आप लोग पूरे देश भर में दंगा नहीं कर सकते हैं सर। ये मेरी आपसे बात है राकेश वर्मा जी। ना आप पुलिस है, ना आप जज है, ना आप कोर्ट है, ना आप एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। तो बजरंग दल का क्या यहाँ पे हक है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर चलिए ठीक है, ये तो सवाल हमें योगी की सरकार से पूछना चाहिए कि आप लोगों को इतना आप लोगों को इतनी खुली छूट क्यों दी हुई है। हम लोग उसका विरोध करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रह करके उसका विरोध करेंगे। और किसी को अधिकार नहीं बनता है कि ये भोली भाली बालिका के ऊपर डोरे डाले, उसके स्कूल कॉलेज के आगे। भोली भाली बालिका नहीं है, नहीं होगी तो आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि वो भोली भाली बालिका है या अडल्ट है जो खुद के अपने डिसीजंस अपने आप ले सकती है। समय बदल रहा है वर्मा जी, समय बदल रहा है। लड़कियों को पता है उनको कैसे जीना है और क्या चाहिए। आप नहीं बता सकते अब उनको कि ऐसे रहो और ऐसे खाओ और इससे शादी करो और उससे बात मत करो। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। राकेश वर्मा ऑफ द बजरंग दल देयर trying to defend what his fringe group is trying to do in various parts of our country today. Well, let's move on from this story and take you on to the other big story that's happening where, in fact, before we do that, let's give you a reaction that's coming in. This is the earliest case that took place, where you see that BJP leader on the screen slapping this Hindu girl who had befriended a Muslim boy. Today what you've seen is also in Uttar Pradesh. 2 cases in just a span of 1 week. Is the silence of the state emboldening these people? Is the big question that we are asking. Well, breaking news coming in. First woman proctor has been appointed at the Banaras Hindu University. Professor Roina Singh has been appointed as the chief proctor. Remember that the previous chief proctor just resigned about 2 days ago, 48 hours ago. In the interim, the dean was given the charge. Now he stepped down, the proctor stepped down, taking moral responsibility for the violence that took place at BHU after students demanded better security, but were lathi charged by the police on late Saturday night instead. We'll try and go across to Apurva to get you more details on this, but looks like a message is being tried to send across by appointing the first woman proctor. One of the biggest problems, Apurva, was that the students said even if there were, these proctors present or the security guard present, they didn't do much about sexual harassment and eve teasing. That's right. It is somehow seen as a step in the right direction is what the students at this point are saying. We spoke to a couple of students who said that yes, it looks like a slight victory for them specifically, and this coming 2 days after the chief proctor Rohan Singh resigned on moral grounds, taking responsibility of what has happened. Now the new proctor has been appointed, who's Professor Roina Singh, who is a professor in the anatomy of the Indian Medical Institute in the Banaras Hindu University, and she has been appointed as the new proctor. And this is the first time in the history of Banaras Hindu University that a woman chief proctor has been made in the varsity, certainly putting out a message there to all of them. And in fact, there has been Facebook post also that is coming out of these students who are saying that this looks like a victory for them, specifically because whenever they went with a complaint to the administration, they were belittled, they were victimized of sorts, and that is why they see this move as a good move at this given point in time. But it is to be seen what really happens next. It is, of course, a step in the right direction is what the students are claiming at this point. All right. Apurva, continue to stay with us as we move on to the other big story that we've been tracking here. There's the latest development in the Pradyuman murder case. The Punjab and Haryana High Court has stayed the arrest of the Pinto family. Their arrest has been stayed until 7th of October. Apurva continues to stay with us and she's got more details. But even though there is an interim relief here, Apurva, the fact is that the court has asked them to join the probe immediately, so they will have to resurface and appear before the police.
Absolutely, and in fact, it looks like a setback as well for the Pradyuman's family. Remember, they have been time and again asking for the entire management to be held accountable, to be questioned, to ideally find out what really happened, what were the kind of lapses that were really out. Now we understand that the Punjab and Haryana High Court has given interim relief, and they have also stayed the arrest of the Pintos till the 7th of October. Now, the next hearing in this case, Tanvi, will be taken place on 7th of October. Now, we also heard the lawyer in this case who spoke some time back saying that the CBI wanted some more time in this case, which is why the court had granted them time till the 7th of October and have asked the Pintos to now join the probe. Now, this is an extremely important development there in this case. Now, they will have to join this development. They will have to join the probe with the CBI now investigating this entire case. It is extremely important that the Pintos now join, and they have been more or less running with this entire case. They have been going from one court to the other, and in fact another question being raised as to the fact that the Haryana government did allow in a way for these Pintos to get away, to go to the court after court, and that's how this entire case has been delayed. Had they perhaps got to the Pintos first, had they questioned the Pintos first, probably we would have had some more answers in this case. But then right now, as we understand that the next hearing in this case is being scheduled to take place on the 7th of October, the CBI, the court now has asked the Pintos to join the probe. Well, in fact, let's also listen in to the lawyer's reaction that we got after this hearing, who also confirms the fact that the Pintos have been told to join the investigation. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑगस्टिन पिंटो, रियान पिंटो और ग्रेस पिंटो इनकी गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक रोक लगाई है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है वो तुरंत प्रभाव से सीबीआई के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, वहां पर पेश होंगे। सीबीआई वकील ने आज 2 दिन का समय मांगा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय चाहिए, और ये समय मांगने के कारण से कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको समय देते हैं, लेकिन तब तक इनको गिरफ्तारी आप नहीं करेंगे। तो सीबीआई वकील के द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया और 7 अक्टूबर की अगली डेट लगी है। 7 अक्टूबर को कोर्ट फैसला करेगी कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए या इनको जो राहत दी गई है वो कंटिन्यू की जानी चाहिए। 2 जयस थॉमस और फ्रांसिस थॉमस ने, जो इस समय जेल में हैं, उन्होंने नियमित जमानत के लिए अर्जी डाली है, जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मैं इसमें प्रद्युमन के पिता की तरफ से जो शिकायत करता है उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और हम इस जमानत का 6 अक्टूबर को भी और 7 अक्टूबर को भी पूरा विरोध करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जब तक सीबीआई का जवाब नहीं आता है और सीबीआई का स्टैंड क्लियर नहीं होता है, तब तक वो इस पर ज्यादा नहीं सुनेंगे और इस पर विस्तार से सुनवाई 7 अक्टूबर को करेंगे। Time for a quick break. On the other side, we again turn our attention towards BHU and the latest from there, so stay tuned. As girl students at Banaras Hindu University were harassed, teased, and they fought back for better security within their university campus, BHU Vice Chancellor has resorted to a bizarre kind of explanation and victim shaming in a sense. He says that the protest by students in the open has actually outraged the modesty of the girl who went through that incident. Apurva is with me. Apurva, he failed to protect these girls. Then he tried to downplay the entire incident by saying, oh, it was just a very light teasing kind of incident, not a very big concern. Then he denied the lathi charge, and now he's turning around and lecturing the girls themselves. Tanvi, this is exactly the kind of attitude and the mindset that the BHU students have been saying, and they have been repeatedly talking about this kind of statements being made by each and every administration of the Banaras Hindu University. Now, this particular statement has come when the Vice Chancellor went to Triveni Girls Hostel yesterday night to meet the girls, and he categorically said that by protesting in the open, the girls have outraged the modesty of the person who went
went through this entire ordeal. Now that shows the kind of mindset, the fact that he refuses to acknowledge the safety and security concerns. He refuses to implement the guidelines. He refuses to even acknowledge or address the safety demands that's been put forth by the girls. Very basic safety demands like the CCTV, street lights. And instead of implementing these things, instead of even acknowledging that yes, the university is deficit in terms of safety measures, the Vice Chancellor, on the contrary, gives a morality lecture to these girls, saying that because these girls protested in the open, that has outraged the modesty. That is the kind of mindset that is being exposed, and it is absolutely shameful, to say the least, that such a statement there is coming from the Vice Chancellor of the Banaras Hindu University, who even goes on to deny that there was any lathi charge happened, despite proof mounting of the kind of incident that had taken place that night, despite the Varanasi Divisional Commissioner coming out and saying that yes, lathi charge did happen, and putting the VC in the dock, saying that had the VC acted on time, this entire incident could have been averted. Despite all of this, we hear the VC again coming out and saying that no lathi charge happened, but the girls should have refrained from protesting in the open, because now that has outraged the modesty of the girl. Well, did he have anything constructive to offer to these students, Apurva, in terms of how will he change the way things are done? Yes, when we know that they tried putting a couple of CCTVs and improving the light, but if the mindset only doesn't change, and if there is no fear of action in the minds of these lumpens, then how will the situation become better? Absolutely, and the students there continue to put forth their demand in terms of gender discrimination, in terms of victimization, in terms of the streetlights not being present, in terms of putting in CCTVs, in terms of many other security and safety demands that they had put forth before the VC a week back, and they had asked the VC, in fact requested the VC to listen into their problems, which did not happen, and ultimately it led to a full-blown face-off between the VC and the Apurva, students. just stay on with me. I'm going to interrupt you there, because I believe we've got a BHU student on the phone line with me. Aparna, thanks for speaking to us here on Mirror Now. We are given to understand that the VC actually went to students in the Triveni hostel and told them कि ओपन में प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, उससे आपने उस स्टूडेंट की अस्मिता को खराब किया. Is that correct? Hello, am I audible? Yes, yes you are. Go ahead. Yeah, we have had several other issues also related to women in our university. And on those occasions also, our VC as well as the wardens and the professors, they, instead of coming out, instead of talking to girls about their problems, they were more concerned about the image of the university. So they were not concerned about when we were protesting there on the nights of 23rd and 24th September. They were not concerned about our security or our demands or what we actually wanted by them. They were only concerned that the main focus was that no girl should go and talk to media. Okay, so this is not the first incidence of molestation in our university. A few months back, there's this hostel called Kasturba Hostel. A bunch of guys, they entered that hostel. Also, there were security men. I don't know how they got entrance into that hostel, and they were shooting a girl in her bathroom. So nobody paid heed to that incident, but it was an important issue. Okay, so at that time also everybody was like, "ये तो चलता है and ये तो होता है," and so yeah. So okay, Aparna, very quickly then, I am just trying to understand this. Your Vice Chancellor is telling you, don't talk about these incidents in open, because that will actually impact your dignity. Is that what he's trying to tell the students? Media also has a very important role to play here, because we have seen headlines like Mahamana ki bagya mein aag kisne lagai, ganda kisne ki. It's not about ganda karna, okay? We are bringing something out in the light which exists in BHU. Yes, absolutely. We are not
making it out of rubbish and all that. If you really want to improve that university, you first need to acknowledge the fact that yes, this thing exists. Absolutely. No, more power to you, Aparna, and to all your colleagues in BHU girls who've decided to come out in open and speak about these issues and fight back, for a better environment to study in. Thank you so much for speaking to us here on Mirror Now. Completely out of time. Lots more news on the other side. Stay tuned.